नमस्कार। मैं जैसे बताया मैं भारत भूषण हूँ और लगभग आधी सेंचुरी जी चुका हूँ, तो ऐसे सख्त वर्ल्ड में इतने साल जीने का एक्सपीरियंस भी हो गया है। मैं अपने अगर मैं कुछ भी जो भी बोलूँगा, जो भी आपको अच्छा लगे, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई टीचर्स. They have contributed whatever I am today. It is because of the people जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, इस लेवल तक पहुंचाया. अगर कोई ख़राब चीज़ है तो इट इज़ माई ओन क्रिएशन, तो आप मेरे को दोष दे सकते हैं. अब बहुत साल पहले जब मैं 8th में पढ़ता था, तो आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट. rather I was very bad student, very bad at mathematics, English. So people used to say, my teachers in school, कि गाय भैंस बकरी सब पढ़ जाएंगे और भारत भूषण कभी नहीं पढ़ पाएंगे. और in 10th standard something happened and I suddenly become very good in mathematics. I started understanding this algebra, though not very good in arithmetic, but I started excelling in mathematics. So I joined college. I opted for economics and mathematics again, and I was very good in mathematics, one of the best in college, DAV Jalandhar. But in BCom Part 1, I got compartment in economics. So economics was taking my life at that time. Then another professor, Dr. S.K. Diman, he was my teacher. He molded me a lot. So he taught me certain concepts, certain things. By his guidance, by his appreciation, by his inputs, I was not able to stood third in university in MA in economics. I was able to enter into Indian Economic Service. So I became a professional economist. So after this, I have been to London School of Economics, Cambridge University, Maxwell School of Public Policy, then Institute of Management, Bangalore. So after this education and after serving in 20 years in government, I thought I should share the same views which my teacher long back shared with me. So there is something which as students stops us to grow, because there is a lot of pressures. We are new to certain things. The people who share our experience with us, they are older. They try to impose their experience on us, and certain things become irrelevant, certain are irrelevant, but it is very difficult to understand what is relevant, what is not. So everyone has his own perceptions and ideas, and ultimately it leads to nowhere. And people become unhappy. Parents have their own idea of how my child should be. They have some dreams which they couldn't do. They try to get it done through their kids. So they impose, you become engineer, you become doctors. Fortunately, my father, I was interested to become a mechanical engineer. He said, no, we should not become mechanical engineers. We are basically born engineers. So things we know we should not study. Whether you should go for commerce, because my father was very bad in accounting. So his partners were giving him a lot of headache because of this accounting things. So he was not aware even this bookkeeping. He had not much educated. He said, you should join a course in which an evening book is taught. I asked everybody, which is the course in which there is a book called evening book? They said, no, it is. Then I understand he is bookkeeping, he is staying at evening book. I don't know, he listened from somebody. So I joined. No, this is what my professor told me. He said, there are 7 kinds of people in this world. The first, at the lowest rank, is that number 1 is people who are animal. They are human form, they look like human beings, but they are animals. They are generally worried about 3-4 things. Major concern is their food. They are always working for food. खाने के लिए काम करते रहते हैं. खाना मिल जाए, बस खाना मिल जाए. मजदूर, मैं कहता हूँ कई बार, मजदूर मजे से दूर.
तो मजदूर लोग जो हैं वो खाने के लिए काम करते हैं, वो सोते हैं, खाना खाते हैं, डरते रहते हैं, जैसे पशु होते हैं ऐसे ही उनका एक जीवन रहता है। यू फाइंड द पीपल हु आर इन लेबर, यहाँ चंडीगढ़ में भी दे 20 सेक्टर में शायद है लेबर मार्केट, दे स्टैंड देयर, तो डिड यू गो देयर एंड उनको काम पे लाते हैं, देयर मेन कंसर्न इज फूड। देन देयर इज दिस पर्सन्स कॉल्ड social animal. Social animal are the people who are a little bit more organized. They have a home, they get the food regularly, there is no dearth of food supply. Generally they are not well educated, they speak in Punjabi or Hindi to general public, a little bit of English with their seniors. They are generally in government parlance, if I speak, they are the people who are in class 3 and class 4 jobs. And they don't have very high dreams, they don't have very high ambitions in the life. They simply say कि खाना मिल जाए, एक दो चार कपड़े अच्छे मिल जाएं, किस्तों पे मारुति कार मिल जाए, ऐसा. They don't dream very high. Then come the people who have developed their mind, they developed their memory. The people who have better memory, they become educated. But the problem with these people is, whatever they study, they become like that. If they study doctor, medical, they say, I am doctor. Do ask, who are you? They say, I am doctor, I am engineer, I am professor, I am, जो पढ़ लेते हैं अपने आप को वही समझने लगते हैं. They don't say I am human being, they say I am doctor, I am this. So, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनको जो पढ़ लेते हैं वही अपने आप को समझने लगते हैं, और इनकी याददाश्त बड़ी अच्छी होती है, सब याद कर लेते हैं चीज़ों को. और अगर कोई धर्म को फॉलो करते हैं, यू आर हिंदूज, दे विल नो ऑल गीता, पुराण, कथा सब जानते हैं, बट दे डोंट इम्प्लीमेंट इन देयर लाइफ, उसको फॉलो नहीं करेंगे. इफ व्हेन द कंप्यूटर साइंस आई से, दे हैव ऑल देयर डमी कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर इन देयर सिस्टम्स, बट दे आर नॉट इंस्टॉल्ड. उनको पता है सच बोलना चाहिए, लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन फॉलो नहीं करते क्योंकि उनको लगता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ, डमी कॉपी की तरह डेटा फाइल में पड़ी है चीज़ें, वहाँ से पढ़ते रहते हैं और ऐसे करके उनका दिमाग चौक हुआ रहता है. एंड दे डोंट डू वेरी हाई थिंग्स इन लाइफ. और नॉर्मली लोग कहते हैं पता नहीं इतना पढ़ाई किया, PhD भी कर लिया, सब कुछ, फिर भी 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही. आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद द सोसाइटी. But the problem is with them, they are not able to install those software in them. They are like Microsoft Word, Office. You put a dummy copy or Windows and it won't work because it has not been installed. This program is not been executed. Then come at the fourth level the people who have some analytical skills. The people with analytical skills, they can break up the things, they can understand things, they follow the scientific method of reduction. They took up a flower, break it up, see it in the microscope, analyze things, put this way, that way, and they have some ideas of their own. The third category people don't have any idea, they are bag of borrowings. They read here, there, and they think it is their ideas, cut and paste method. But these analytical people, they can think. They are the people who basically are, they become editors of the newspapers. If you see in the society, HOD in the colleges, and some contribution in the subject, they do it. Sometimes I include these bureaucrats, administrative service people also in there. They, third category, fourth category people, they don't worry about the food. खाने की उनको चिंता नहीं, रहने की चिंता नहीं, जहाँ जाएंगे somebody will arrange there, खाना पीना रहना सब इंतजाम हो जाएगा. अगर जितना अच्छा खाना चौथे कैटेगरी के लोग हैं, लोग खुद नहीं खाते, उनको खिला देते हैं नया सब कुछ ला के. Then there are people who develop this sixth, you see, अरे पीछे रहने दो यार, don't change it. Then there are people who have developed intuition in them. Intuitive people are the people, उनका mind थोड़ा और develop हो जाता है, they enter into higher layer of the mind. They can think of the things जो दूसरे नहीं कर सकते. थोड़े सालों में अगर बिजनेसमैन होंगे तो बहुत तरक्की करेंगे. जैसे टी सीरीज का था गुलशन कुमार, बहुत तरक्की करते हैं, उनको लगता है शायद शिव जी भोलेनाथ हम पे खुश हैं, वैष्णो माता की कृपा है, भाई गुरु दी मेहर है, ऐसे सोचते हैं. बट दिस इज द इनसाइड दे हैव डेवलप्ड मेंटल लेयर. और अगर ये डॉक्टर होंगे तो लोग कहेंगे ये ऑपरेशन आंखों का होना है, लेकिन समबडी इन मद्रास चेन्नई में जाके ये लोग फलाना डॉक्टर करेगा. ऑल हैव डन MS, बट दैट डॉक्टर विल डू सर्जरी
वो इलाज करेगा. कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, ए पर्टिकुलर इंजीनियर विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो ही हैज़ डेवलप्ड दैट इंट्यूटिव एबिलिटी. ये लोगों को भी खाने पीने रहने की, पैसों की, ऐसी चीज़ों की चिंता नहीं रहती है. एंड देन कम द पीपल हु आर डेवलप द विजडम. सिक्स्थ कैटेगरी, विजडम में थोड़े से लोग होते हैं देश के अंदर. जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे हमारे पास, मोन्टेक सिंह को भी डाल देते हैं, आई हैव वर्कड विद हिम. एंड ये लोग जो हैं थोड़े से कंट्री में होते हैं, नोबेल लॉरिएट टाइप लोग, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग, जिनमें ये अकल डेवलप हो जाती है और वो लोग दुनिया में वो गाइड करते हैं, साइंस में, सोशियोलॉजी में, साइंस में, हर जगह. वो थोड़े थोड़े से लोग होते हैं, यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स, थोड़े से लोग होते हैं. और देन कम द पीपल विद विजन. विजनरी लोग थोड़े से होते हैं, बहुत कम, सदियों में कभी कभी पैदा होते हैं. बुद्ध जैसे हो गए, गुरु नानक हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, इस तरह के लोग. इनको हम जहाँ तो मार डालते हैं पकड़ के कि हमारी स्कीम में फिट नहीं बैठते, जहाँ हम इनके पैर छूते रहते हैं. द प्रॉब्लम इज एवरी ह्यूमन बीइंग, जो भी हम लोग हैं, ये पहली कैटेगरी एनिमल से लेके विजन तक हमारी यात्रा है. हमें यहाँ तक पहुँचना है. दिस इज माई प्रोफेसर डॉक्टर एस के दिमाग टोल्ड मी व्हेन आई वाज बीकॉम सेक फर्स्ट ईयर कि भारत भूषण, तुम्हें ये अभी तुम ये फर्स्ट कैटेगरी में कहीं घूम रहे हो, इसीलिए तो पढ़ना लिखना ठीक से आ नहीं रहा, कंपार्टमेंट ले रहे हो, एंड यू शुड ग्रो अप टू द लेवल ऑफ 7 लेवल. तो 7वें लेवल तक तुम्हें जाना है. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. देन ही टोल्ड मी, मैंने कहा सर ये होगा कैसे? उन्होंने कहा कि खूब पढ़ो, जोर लगा के पढ़ो. तो वी हैव ए अमेरिकन फिलोसफर बिल्डोरेंट, उसका मॉडल हमारे दिमाग में था. तो वी स्टार्टेड रीडिंग. वो 18 घंटे रोज पढ़ते थे. तो आई स्टार्टेड रीडिंग 18 आवर्स ए डे. 5 साल तक मैंने 18 घंटे पढ़ना शुरू किया. और डीएवी लाइब्रेरी जलंधर थी, मैंने उसमें सारी किताबें, मैथ्स की, साइंस की, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, सारी पढ़ डाली, कोई नहीं छोड़ी. एक आध डिक्शनरी भी याद कर दी. डिक्शनरी का ये है कि जब मैं पढ़ता था तो मुझे भूल जाता था. आई जनरली यूज्ड टू फॉरगेट. एंड ही आस्क्ड मी टू improve your English, you should read this Reader's Digest. I started reading that, but if I read one paragraph, 10 of the words I was not knowing. Then he asked me, why don't you डिक्शनरी. मैंने कहा सर ये वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता चलते, कहाँ से आते हैं? उन्होंने कहा डिक्शनरी होती है. फर्स्ट टाइम आई लर्न देयर इज अ डिक्शनरी आल्सो. देन आई परचेज दिस एडवांस लर्न डिक्शनरी एंड इट कॉस्टेड मी एट 58 रुपीज एट दैट टाइम. तो प्रोफेसर साहब के पास गया, तो देन ही सेड व्हाट इज नाउ योर प्रॉब्लम? मैंने कहा सर वो डिक्शनरी में सारा दिन देखता रहता हूँ, थोड़ा सा पढ़ता हूँ, फिर डिक्शनरी. तो उन्होंने कहा तुम डिक्शनरी याद ही क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने कहा सर डिक्शनरी याद करना मुश्किल काम है. तो उन्होंने कहा कि क्या, कितने की आई है डिक्शनरी? मैंने कहा सर 58 रुपीज़ की. तो ही सेड क्या तुम्हारा दिमाग 58 रुपये का भी नहीं है? इतना भी काम नहीं कर सकता? मैंने कहा नहीं सर, इससे तो महंगा ही लगता है. देन ही सेड ओके गो अहेड ऑन दिस, डू इट. बट मैंने कहा महीना ट्राई किया, वो याद ही ना हो. देन आई आस्क्ड हिम कि सर किसी को याद भी है? देन उन्होंने मुझे कहा कि पिकअप में डिक्शनरी, वेबस्टर डिक्शनरी बड़ी सारी उठाई. आई आस्क्ड में वर्ड, उसने कहा ये 1165 पेज पे है, इसको लेफ्ट से 4th वर्ड है, ऐसे लिखा हुआ है. देन ही सेड पिक अप अनदर डिक्शनरी. देन आई अंडरस्टैंड दिस प्रोफेसर रिमेंबर्स बाय हार्ट ऑल 5 डिक्शनरीज. कोई भी वर्ड उनसे पूछो वो बताते किस पेज पे है, कहाँ पे है. सो मुझे लगा ये अगर ये कर सकते हैं तो मुझे भी कर लेना चाहिए. सो ओवर द ईयर्स दोस्तों, मैं आपसे जो मेरा यहाँ आने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप लोगों को ये 7 लेवल जो है पूरे करने चाहिए किसी तरह से, जो मेथड. लेकिन जो एजुकेशन है, जो कॉलेज हमें पढ़ाता है, ये हमें 3rd लेवल से ऊपर नहीं जाने देता. ये हमें मेमोरी लेवल तक पढ़ाता है. 4th, 5th, 6th, 7th ये आपको खुद अपनी मेहनत से करने हैं. नाउ वेरी ब्रीफली, अभी पीछे आया था, देयर आर basically to just I am going to introduce, time की shortage है, I have got another 3 minutes. इतना कहूँगा कि there are 3 types of resources. One is called physical resources, the other is called psychological resources, psychic resources, and third one is spiritual resources. तो जो physical resources हैं, जैसे ये hall है, mic, जो भी चीज़ visible है, that is we call physical resources. They are limited in this world. उनकी limitation है, but they are controlled by साइकिक रिसोर्सेज. जैसे कोई आदमी
मजदूर है उसको हम कहें कि लेके आते हैं काम करने के लिए, वी डोंट आस्क हिम टू साइन ए बॉन्ड. ये नहीं कहते कि बॉन्ड साइन कर तो 5 साल तक हमें छोड़ के नहीं जाएगा. रेदर हम उसे कहते हैं कि 2 दिन का काम है, 1.5 दिन में कर देगा तो बहुत अच्छा है, जल्दी से निकलो. लेकिन इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पढ़ के आता, तो हम उसको 2.5 करोड़ का पैकेज देते हैं और कहते हैं 3 साल तक तू छोड़ के नहीं जा सकता. सो बेटर साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज, बेटर ए पर्सन इज इन दिस सोसाइटी. And psychological resources are controlled by spiritual resources. And the Indian system has developed so many things to develop those psychological resources and spiritual resources. So if we are able to do it, our movement is psychophysical and physico-psychic. जब दुनिया को कोई, when we see something, the moment I see somebody sitting there, I see this camera, then the movement is physico-psychic. It goes inside, somebody inside says it is a camera because it has seen it earlier. The software and hard things matches. I say that this is a moving camera which is recording the things. But if I have not seen it earlier, then I will say I don't understand what it is. Then I will ask somebody. So psychic resources are necessary to understand this physical world. अगर किसी का दिमाग आउट हो जाए तो उसको पैसों, अगर हम बंदर को 1 लाख रुपया दे दें और कहें जाओ मौज कर, वो क्या करेगा? सारे पैसे फाड़ फूड़ के फेंक देगा, क्योंकि इट डजंट हैव द साइकिक रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड द फिजिकल रिसोर्सेज. अगर हम गधे को 1 किलो सोने का हार पहना दें तो ही वोंट बी हैप्पी विद दैट. वो सोचेगा पता नहीं क्या गले में लटका दिया है, मे बी ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट, बिकॉज द साइकिक रिसोर्सेज डजंट कॉरस्पॉन्ड टू हिज physical resources. Similarly, psychic resources are also limited, though they are 100 times more than physical resources, but spiritual resources are unlimited. Since man has this quest to have unlimited things, आदमी सब कुछ चाहता है, तो अगर उसको spiritual resources पे hand कर लेगा, then his inner quest will be fulfilled. और जो दूसरों का कब्जा करने में लगा रहता है कि ये भी छीन लूँ, ये भी छीन लूँ, वो सब ठीक हो जाएगा. सोसाइटी विल बी बेटर प्लेस टू लिव. सो I conclude this now. Thank you very much for patiently listening.